कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की छत्र छाया में स्थापित दामोदर देश यात्रा द्वारा आयोजित नित्यम भागवत सेवया कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों को एकादशी की खूब खूब बधाइयाँ। आज का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से रहेगा। 6:30 से 6:45 नरसिम्हा कवचन का पठन हर ग्रेस अपराजिता माता जी के द्वारा किया जाएगा और ठीक 6:45 को आज का मुख्य कार्यक्रम भगवत कथा कैंटो 1 चैप्टर 14 श्लोका 5 से 8 का प्रवचन हिज ग्रेस कृपा निधि दास प्रभु जी के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। उसके पश्चात प्रश्न उत्तर घोषणाएं आदि का संचालन होगा। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हरग्रिस अपराजिता माता जी को वो आके नरसिम्हा कवचम का पठन करे। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मेरी आवाज क्लियर है? यस माता जी। ओम अथ श्री नरसिंह कवचम स्तोत्रम। श्री नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह कवचम वक्षे प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनम् सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकम् ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितम् बिभृत्प्रस्थं त्रिनयनं शरद इन्दुसमाप्रभं लक्ष्मी आलिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितम् चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं सरोजशोभितोरक्षकं रत्नकेयूरमुद्रितम् तप्तकाञ्चन कांचन संकाशम पीतनिर्मलवाससम् इन्द्रादिशूरमौलिस्था स्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः
विराजितपददा द्वन्द्वान् शङ्खचक्रादिहेतिभिः गुरुत्माता च विनायात् स्तूयमानं मुदन्वितम् स्वहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नरसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षार्थसम्भवः स्वर्गोऽपि सस्तम्भवासा फलं मे रक्षतु ध्वनिं नरसिंहोऽद्रशुपात सोमसूर्याग्निलोचनः स्मृतिं मे पातु नरहरिः मुनिवार्या स्तुतिप्रियः न सम्मे सिंहनाशस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः सर्वविद्यान्तिभिः पातु नरसिंहो रशनं मम वक्त्रं पत्वेन्दुवादानं सदा प्रह्लादवन्दितः नरसिंह पातु मे कण्ठं स्कन्धो भूभारतं दिव्यास्त्रशोभितभुजः नरसिंह पातु मे भुजौ करो मे देव वरदो नरसिंह पातु सर्वतः हृदयं योगी साध्यश्च निवासं पातु मे हरिः मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षः कुक्षिविदारणः नाभिं मे पातु नरहरिः स्वनाभिब्रह्मस्मस्तुतः ब्रह्माण्डकोटया कट्यं यस्यासो पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदृक् उरुमनोभावः पातु जानुनी नररूपदृक् जङ्घे पातु धराभारः कृतायो सौम्रकेशरी सुरराज्यप्रदा पातु पादौ मे नरहरीश्वरः सहस्रशिरसा पुरुषा पातु मे सर्वशास्तनुम् महोग्रह पूर्वतः पातु महावीरग्रजो गणिता महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नरतु पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नरसिंह पातु वायव्यां सौम्यं भूषणविग्रहः ईशान्यं पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः समासारभयात् पातु मृत्योर्मृत्युर्निकेसरी इदं नरसिंह कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान् यः पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपार्जयते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति यशम् सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूमि अन्तरिक्ष दिव्यानां गृहाणां विनिवर्णनम् वृश्चिको रक्षम्भूता विशापारपरं ब्रह्मरक्षसयक्षाणां दुरुतारशरणकरणम् भुजे वाताले पत्रे वा कवचं लिखितं शुभम् करामूले धृतं येन सिद्ध्येयुः कर्मसिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वम् एव जयं लभेत् एकसन्ध्यां त्रिसन्ध्यां वा य पठे नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति त्वत्रिंशतिसहस्राणि पठेच्युदामनं नृणाम् कवचस्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणाम्
तिलकं विन्व्यषद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवरं जपमानस्तु दत्तं वरि अभिमन्त्रि च प्रशायद्यो नरो मन्त्रान् नरसिंहध्यानम् आचरेत् तस्य रोगः प्रणश्यन्ति यच शुकुकिशम्भवः किं मात्रा भूर्भुक्तेन नरसिंहसदृशो भवेत् मनश्चिन्तितं यत्तु स च प्राप्नोति यशाम्यशाम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हरन्तं रूपयन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं गुरुरयनतं शारनिकरशतिर्दिव्य सिंहं नमामि गर्जन्तं गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हरन्तं रूपयन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं घोरनित्यं शारनिकरसतरदिव्यसिंहं नमामि गर्जन्तं गार्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हरन्तं रूपयन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं घोरनित्यं सारनिकरशतिर्दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादोकं श्रीनरसिंहकवचं सम्पूर्णम्। श्री नरसिंह भगवान की जय। माता जी अभी टाइम है, थोड़ा सा कीर्तन कर सकते हैं, राइट? Yes, Mataji, but if possible, can you please read the translation? Okay, Mata. I shall now recite the Narsimha Kavach formally spoken by Prahlad Maharaj. Its most boss vanquishes all kinds of impediments and provides one all protection. It bestows upon one all opulence and can give one elevation to the heavenly planets or liberation. One should meditate on Lord Narsimha, Lord of the universe, seated upon a golden throne. His mouth is wide open. He has three eyes and he is as radiant as the autumn moon. He is embraced by Lakshmi Devi on his left side, and his form is the shelter of all opulences, both material and spiritual. The Lord has four arms and his limbs are very soft. He is decorated with golden earrings. His chest is represent like the lotus flower and his arms are decorated with jewel-studded ornaments. He is dressed in a spotless yellow garment which exactly resembles molten gold. He is the original cause of existence beyond the mundane sphere for the great demigods headed by the Indra. He appears bedecked with rubies which are blazingly effulgent. His 2 feet are very attractive and he is armed with various weapons such as the conch, disc, etc. Garun joyfully offers prayers with great reverence. Having seated Lord Narsimhadev upon the lotus of one's heart, one should recite the following mantra. May Lord Narsimha, who protects all the planetary system, protect my head. Although the Lord is all prevailing, the hid himself within a pillar, may he protect my speech and the results of my activities. May Lord Narsimha, whose eyes are the sun and fire, protects my eyes. May Lord Narhari, who is pleased by the prayers offered by the best of sages, protect my memory. May he who has the nose of a lion protect my nose, and may he whose face is very dear to the goddess of fortune protect my mouth. May Lord Narsimha, who is the knower of all sciences, protect my sense of taste.
May he whose face is beautiful as the full moon and who is offered prayers by Prahlad Maharaj protect my face. May Lord Narsimha protect my throat. He is the sustainer of the earth and the performer of ultimately wonderful activities. May he protect my shoulder. His arms are resplendent with the transcendental weapons. May he protect my shoulders. May the Lord who bestows benedictions upon the demigods protects my hands, and may he protect me from all sides. May he who is achieved by the perfect yogis protect my heart, and may Lord Hari protect my dwelling place. May he who ripped apart the chest, the abdomen of the great demon Hiranyaksh protect my waist, and may Lord Narhari protect my navel. He is offered prayers by Lord Brahma, who has sprung from his own navel. May he on whose hips rest all the universe protects my hips. May the Lord protect my private parts. He is the knower of all mantras and all mysteries, but he himself is not visible. May he who is the original Cupid protect my thighs. May he who exhibits a human like form protect my knees. May the remover of burden of the earth, who appears in a form which is half man and half lion, protects my calves. May the bestower of heavenly opulence protect my feet. He is the supreme controller in the form of a man and lion combined. May the thousand headed supreme enjoyer protect my body from all sides and in all respects. May that most ferocious personality protect me from the east. May he who is superior to the greatest heroes protect me from the southeast, which is presided over by Agni. May the Supreme Vishnu protect me from the south, and may that person of blazing luster protect me from the southwest. May the Lord of everything protect me from the west. His faces are everywhere, so please may He protect me from this direction. May Lord Narsimha protect me from the northwest, which is predominated by Vayu, and may He whose form is in itself the supreme ornament protect me from the north where Som resides. May the all auspicious Lord, who himself bestows all auspiciousness, protect from the northeast the direction of the sun god, and may he who is death personified protect me from fear of death and rotation in this material world. This Narsimha Kavach has been ornamented by issuing from the mouth of Prahlad Maharaj. A devotee who reads this becomes need freed from all sins. Whatever one desired in this world, he can attain without doubt. One can have wealth, many sons of a long life. He becomes victorious of who desires victory and indeed becomes a conqueror. He wards off the influence of all planets, earthly, heavenly, and everything in between. This is the supreme remedy for the poisonous effects of serpents and scorpions and Brahma Raksha ghosts and yakshas are driven away. One may write this most auspicious prayer on his arm or inscribe it on a palm leaf and attach it to his wrist, and all his activities will become perfect. One who regularly chants this prayer, whether once or thrice daily, he becomes victorious with whether among demigods, demons, or human beings. One who with purified heart recites this prayer 32,000 times attain the most auspicious of all auspicious things, and material enjoyment and liberation are already understood to be available to such a person. This Kavach mantra is the king of all mantras. One attains by it what would be attained by anointing oneself with ashes and chanting all other mantras. Having marked one's body with tilak, taking achamana with water and reciting this mantra 3 times, one will find that the fear of all inauspicious planets is removed. That person who recites this mantra, meditating upon Lord Narsimhadev, has all of his disease vanquished, including those of the abdomen. Why should more be said? One acquires qualities
on oneness with himself, Narsimha himself, there is no doubt that the desires in the mind of one who meditates will be granted. Lord Narsimha roars loudly and causes others to roar. With his multitudes of arms, he tears the demons asunder and kills them in this way. He is always seeking out and tormenting the dominant descendants of Diti, both of this earth planet and in the higher planets, and he throws them down and scatters them. He cries with great anger as he destroys the demons in all directions. Yet with his unlimited hands, he sustains, protects, and nourishes the cosmic manifestation. I offer my respectful obeisances to the Lord who has assumed the form of transcendental lion. Thank you so much, Mataji. Narsim Bhagwan ki jai, Srila Prabhupada ki jai. हरे Hare कृष्णा Krishna. माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। आपने बहुत अच्छे से नरसिम्हा कवचन का पठन किया और उसका अनुवाद का भी पठन किया। धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हुए आज के वक्ता के परिचय के लिए मैं हमारे होस्ट हिज ग्रेस ब्रजजन नंदन प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की कथा में। तो हमारे मुख्य कार्यक्रम में श्रीमद् भागवतम की कथा। आज हमारा बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं कृपानिधि प्रभु, उनकी मुखारविंद से आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का पठन होगा। प्रभुपाद की जो शिष्य हैं कृपानिधि प्रभु, वो इंग्लिश में क्लास देंगे और उनकी सहायता में, उनके सहयोग में हमारे केशव भारती प्रभु उसका हिंदी का अनुवाद करेंगे। तो प्रभुपाद जी के परिचय के लिए मेरा ये सौभाग्य है, तो बहुत प्रसन्न मेरा चित्त है और सभी भक्तों के सौभाग्य के लिए और मेरे सौभाग्य के लिए उनका परिचय करने का प्रयास करता हूँ। कृपानिधि प्रभु जो है प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। वो 6 जून 1972 में 21 साल की उम्र में पोर्टलैंड ओरेगन यूएसए में वो जुड़े और प्रभुपाद जी के आदेश पर बहुत जगह यात्रा करते हुए बहुत सारे पुस्तक वितरण किए ब्रह्मचारी की अगले 11 साल तक। उसके बाद में नवंबर 1977 में वो वृंदावन आए। प्रभुपाद जी की जो अंतिम लीला हुए तो उसमें वो भाग लिए और उनका ये सौभाग्य था कि प्रभुपाद जी की जो समाधि है वो अपने हाथों से वो उनका जो है वो सेवा की वहाँ पर रात को नवंबर 14 तारीख को जब प्रभुपाद जी अपनी लीला समाप्त किए इस पृथ्वी पर। फिर वो इंडिया में वापस 73 में आए और न्यू दिल्ली में जो प्रेसिडेंट की वहाँ पर सेवा की अगले 6 साल। उसके बाद में वहाँ पर आईआईटी में भक्ति योग का क्लब उन्होंने शुरू किया, जो साइंस विज्ञान और धर्म के ऊपर वहाँ पर जो है क्लासेस वगैरह हुआ करते थे। फिर वो बहुत सारे लेक्चर्स वगैरह किए भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट में और साइंस और रिलीजन में। फिर वो कनाडा वापस चले गए 1989 में और फिर बहुत सारे पुस्तक वितरण किए, प्रचार किए यूनिवर्सिटी कैंपों में। बहुत सारे अगले 30 साल तक बहुत बहुत सेवा किए हैं। अब वो इस समय वो श्रीराम मायापुर में अपने परिवार के साथ श्री पंचतत्व की वहां पर सेवा करते हैं। क्लास प्रभुपाद जी की पुस्तक वितरण करते हैं इंटरनेशनल बुक बूथ में। बहुत सारे लेक्चर्स विश्व भर में जूम के माध्यम से प्रचार करते हैं और हरिनाम में वो भाग लेते हैं। इस तरह से पूरा कृष्ण भावनामृत होते हुए बहुत सारे विद्यार्थियों को कृष्ण भावनामृत देते हैं। प्रोफेसर्स जो गेस्ट आते हैं, यात्री हैं, उन सबको। तो आए चलते हैं, आज प्रभु को हम लोग आमंत्रित करते हैं। कृपानिधि प्रभु, we're very very fortunate that you've taken your valuable time to come and spend time with us on this wonderful Srimad Bhagavatam class that we'll all be very fortunate to hear. Please accept my humble obeisances. Your class will be in English, but we also have, because the Hindi class, so there will be a translation supported by his guest Keshav Bharati Prabhu. So all devotees will pay obeisances to you, Vaishnav Pranam, and then you can begin the class. Vancha kalpatrubhyascha kripa कृष्णवेवचा पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
Most welcome, Prabhu. And now we will give the mic to you to manage for the class. Hare Krishna. So should I speak and then let the person translate into Hindi? That's right, yeah. Oh, Keshav okay. Prabhu, you're there? Can you Hare hear? Krishna, Prabhuji. Yes, he's also there. Jai. Yes, Thank you, Hare Prabhu, for joining in. Yes, Prabhu. Over to you. Hare Krishna. Shall we start with Jai Radha Madhav Sure, quickly? yes, Or? yes, yes, please. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balaba Girivanidhari Gopi Jana Balaba Girivanidhari Yashoyanandana Brajajana Ranjana Yashoyanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balaba Girivanidhari Gopi Jana Balaba Girivanidhari Yashoyanandana Brajajana Ranjana Yashoyanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayam Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Astatarta Shishimad ISKCON founder Acharya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Kodi Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Shri Gaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shyamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Rajabhumi Brindavandam Ki Jai Yamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Tulsi Maharani Ki Jai Gaur Premanande all glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. all glories to Kripanidhi Prabhu. And I have my chatter. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskricha Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasan Tato Jayamudirayat Nasta Prayeshu Avadishu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 14, Text 5 to 8, regarding the disappearance of Lord Krishna from our
Bhumi planet. हरे कृष्णा। तो हम अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 14वें अध्याय से श्लोक संख्या 5 से लेके 8 तक। तो किस तरह से भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी से जो है अपना तिरोभाव करते हैं या अप्रकट होते हैं। Text 5 I'll chant. Nimitanyatarishtani kale tvunanugete nrinam lobadya dharma prakritim dristvo vachanujam nripaha. So I will read the translation and purport by Srila Prabhupada as well as transliteration. And we'll move on. Nimitani causes ati very serious, aristani bad omens, kale in course of time, two but anugate passing away, nrinam of humanity at large, lobhadi such as greed, adharma irreligious, prakritim habits, drisva having observed, uvacha said, anujam young brother, nripaha the king. In course of time it came to pass that people in general became accustomed to greed, anger, pride, etc. Mars Yudhisthira, observing all these omens, spoke to his younger brother. Purport: such a pious king as Mars Yudhisthira once became perturbed when there were such inhuman symptoms as greed, anger, irreligiosity, hypocrisy rampant in society. It appears from this statement that all these symptoms of degraded society were unknown to the people of the time, and it was astonishing for some of them, or for them to have experienced them with the advent of the Kali Yuga, or the age of quarrel. Yudhisthira uvacha sampreshito dwarakayam Jishnur bandhu jujukshaya Gyatam cha punyashlokasya Krishnasya cha vichestitam. Maharaj Yudhisthira said to his younger brother Bhimasena, I sent Arjuna to Dwarka to meet his friends and to learn from the personality of Godhead Krishna of his program of work. Gata sapta dunamasa Bhimasena tavanujaha Nayati kasyava hetor Naham vededam anjasa. Since he departed, 7 months have passed, yet he has not returned. I do not know factually how things are going there. And text number 8 with a large purport. Api devarshina dishtaha sakaloyam upashtitaha yadatmanongam akridam Bhagavan utsiskrishati. Api devarshina dishta sakaloyam upashtitaha yadatmanongam akridam Bhagavan utsiskrishati. Api, whether Deva Rishina, by the demigod Saint Narada, Adishtaha, instructed, Saha, that, Kalaha, eternal time, Ayam, this, Upashtitaha, arrived, Yada, when, Atmana, of his own self, Angam, plenary portion, Akrida, manifestation, Bhagavan, the personality of Godhead, Utshish Prachati, is going to quit.
Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Is he going to quit his earthly pastimes as Deva Rishi Narada indicated? Has that time already arrived? I'll read it one more time. Is he going to quit his earthly pastimes as Deva Rishi Narada indicated? Has that time already arrived? Purport. As we have discussed many times, the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna, has many plenary expansions, and each and every one of them, although equally powerful, executes different functions. In Bhagavad Gita, there are different statements by the Lord, and each of these statements is meant for different plenary portions or portions of the plenary portions. For example, Sri Krishna, the Lord, says in Bhagavad Gita, whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharat, and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself to deliver the faithful, to annihilate the miscreants, and also to reestablish the principles of occupational duty. I appear in every age. If I should cease to work, then all humanity would be misdirected. I would also be the cause of creating unwanted population, and I would thereby destroy the peace of all sentient beings. Whatever action a great man performs, common men will follow, and whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. All these above statements by the Lord apply to different plenary portions of the Lord, namely his expansions such as Sankarshan, Vasudev, Pradyumna, Aniruddha, and Narayan. These are all he himself in different transcendental expansions. And still the Lord as Sri Krishna functions in a different sphere of transcendental exchange with different grades of devotees. And yet Lord Krishna, as he appears once every 24 hours of Brahma's time, or after a lapse of 8,640,000,000 solar years, in each and every universe, and all his transcendental pastimes are displayed in each and every universe in a routine spool. But in that routine spool, the functions of Lord Krishna, Lord Vasudeva, etc., are complex problems for the layman. There is no difference between the Lord's self and the Lord's transcendental body. The expansions execute different activities. When the Lord, however, appears in his person as Lord Sri Krishna, his other plenary portions also join in him by his inconceivable potency called Yoga Maya. And thus the Lord Krishna of Vrindavan is different from the Lord Krishna of Mathura or the Lord Krishna of Dwarka. The Virat Rupa of Lord Krishna is also different from him by his inconceivable potency. The Virat Rupa exhibited on the battlefield of Kurukshetra is a material conception of his form. Therefore, it should be understood that when Lord Krishna was apparently killed by the bow and arrow of the hunter, the Lord left his so-called material body in the material world. The Lord is Kaivalya, and for him there is no difference between matter and spirit, because everything is created from him. Therefore, his quitting one sort of body or accepting another body does not mean that he's like the ordinary living being. All such activities are simultaneously one and different by his inconceivable potency. When
When Maharaj Yudhishthira was lamenting the possibility of his disappearance, it was just in pursuance of a custom of lamenting the disappearance of a great friend. But factually, the Lord never quits his transcendental body, as is misconceived by less intelligent persons. Such less intelligent persons have been condemned by the Lord himself in Bhagavad Gita, and they are known as mudha. That the Lord left his body means that he left again his plenary portions in the respective Dhamma transcendental abodes, as he left his Virat Roop in the material world. Om Jnana Timirandasya Gyana Gana Shalakaya Chakshurun Militam Gena Tasmai Shri Guruve Namaha. My dear devotees, thank you very much for inviting me to speak today. Hopefully we can get some light from the Srimad Bhagavatam and try to help all the conditioned souls throughout this planet, which is the main mission of Srila Prabhupada. Translation. Yes. हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, ताकि हम श्रीमद् भागवतम का कुछ प्रकाश की चर्चा कर सके, जिससे सारे जो जीव है उनका उद्धार हो सके. Thank you. So, in the beginning of Srila Prabhupada's purport, he's describing Lord Krishna's unlimited potencies, unlimited nanavataram akarod bhuvaneshu kintu Krishna swayam samavavat paramapumanyo govindam adipurusam tamaham bhajami. So, although the Lord manifests in many millions and trillions of avatars, some are Shaktavesh avatars, some are Vishnu Tattva avatars. We know that there are different types of avatars. Lord Shiva is a Guna avatar, and he is 80%, something like 80% of Lord Krishna. Ete chamsa kalapunsam Krishnastu Bhagavan Swayam. Indradi Vyakulam Lokam Mridyanti Yuge Yuge. In this first canto, Sukadev Goswami is saying that the Lord appears, the independent Lord appears when he has to vanquish the friends of the demigods. Of course, the demigods are devotees. Lord Indra, Indrari Vyakulam Lokam. Lord Indra sometimes encounters different enemies. The demigods sometimes are fighting with the demons. Suras against asuras. As Krishna says in the 16th chapter, two types of living human beings, the asuras and the suras. But he said, don't worry, Arjuna, for you are of the saintly qualities. He is a devotee of the Lord. So out of compassion, sorry, go ahead. तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण की असंख्य शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं, साथ ही साथ बता रहे प्रकट होते हैं इस पृथ्वी पर, कभी शक्त्यावेश अवतार में, कभी गुणा अवतार में, कभी विष्णु तत्व अवतार में. भगवान शिव जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार है, वो 80% जो है भगवान श्री कृष्ण के गुणों के साथ आते हैं. तत्पश्चात यहाँ पर प्रथम स्कंद के ये अध्याय में ये एते चामसा कलापुंसा नाम का श्लोक है, उसमें बताते हैं कि जब इंद्र और जो देवता गण है, जब वो व्याकुल होते हैं या असुरों द्वारा सताए जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण अवतरित होके उनका उनका संरक्षण करते हैं. तो इस तरह से यहाँ पर वर्णन आता है इंद्रारी व्याकुलम लोकम. और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को ही बताते हैं, क्योंकि तुम में दैवी गुण है या साधु वाले गुण है, इसलिए तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा. So of all the different warriors at the battlefield of Kurukshetra, 640 million were killed,
But Krishna, he protected the Pandavas because they're very dear to him, his dear devotees. And Krishna himself tells Arjuna, Mat Chita Sarva Durgani, Mat Prasada Tarishyasi. He said, Chitta, you should always be conscious of me. And by my mercy, I will remove all the different obstacles in your life, all the different adverse enemies, all different problems in your life. Mat prasada tarishyasi. I remove them because you're my bhaktosi me sakacheti. You're my devotee and you are my friend. तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि आप डरिए मत, क्योंकि बस आप मेरा चिंतन कीजिए, आप मेरा स्मरण कीजिए। जब तक आप मुझे मेरा मेरा चिंतन करेंगे, मुझे स्मरण में रखेंगे, जितने भी सारी विपत्तियां आपके समक्ष आएंगी मैं उन सभी को हटा दूंगा। और आपके जीवन में भी जितने भी विपत्ति आएंगी उन सब से मैं आपका संरक्षण करूंगा। केवल आप मुझे आपके स्मरण में रखिए, आपके चेतना में रखिए। However, one may say, as Prabhupada says, one may say, how can God be merciful when he says here, Parichanaya sadhanam vinashaya cha duskritam, that I destroy the miscreants and I protect the sadhus. How can this be a merciful God? Prabhupada says, no. When Krishna kills the demons like Hiranyakashipu, like Ram killed Ravana, Krishna killed Kamsa as well, Shishupal, they also get Swarupya Mukti, Sarishti Mukti, Salokya Mukti. They get all the different 5 types of liberation in Vaikuntha because Krishna has touched them and he's Apapa Vidham. He can purify anything and he can never be contaminated. और यहाँ पर भगवान अर्जुन को इसलिए कह रहे हैं गीता में, क्योंकि अर्जुन उनके सखा भी थे और उनके प्रिय भक्त भी थे। और साथ ही साथ वहां पर जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में लगभग 8.4 मिलियन अर्थात काफी करोड़ों संख्या में जो है सबकी मृत्यु हुई, लेकिन कृष्ण अर्जुन को आश्वासन दे रहे कि आप डरिए मत, मैं आपका संरक्षण करूंगा। और इस तरह से जो है प्रश्न हमको उठ सकता है कि भगवान किस तरह से हम पर कृपा करते हैं, जबकि भगवान कह रहे हैं कि मैं असुरों का विनाश करता हूँ। तो इस तरह से कैसे भगवान कृपा करते हैं? तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उन असुरों को स्पर्श करते हैं या उनके स्पर्श मात्र से ही वो पवित्र हो जाते हैं और उनको भी सारूप्य सालोक्य इस तरह से उनको मुक्ति प्राप्त होती है और इस तरह से उनका भी उद्धार भगवान श्री कृष्ण करते हैं। So ultimately, the Lord is not apathetic towards those, even the demons. He kills them. He also sends his empowered avatars, Shaktivish avatars, or he himself appears in avatars. Kalki avatar will come. Matsya avatar came. Hayagriva came to save the Vedas. Of course, we know Lord Nishingadev, Lord Varaha, Lord Vamandev. So the Lord is out of compassion coming even to help the non-devotees, the demoniac class of people, especially in this Kali Yuga, trying to deliver them out of great compassion, trying to deliver them. तो भगवान करुणावश इस धरातल पे आते ऊपर हैं। पानी नहीं है हो, ऊपर नहीं पानी है, तब यहाँ से क्यों लेके आ रहे? तो भगवान करुणावश इस धरातल पे आते हैं ताकि ऐसे जो असुर लोग हैं या जो प्रतिकूल की भावना रखते हैं उनको भी सहायता प्रदान कर सके और उनको भी भक्ति मार्ग पर जो है लेके आ सके। इस तरह से भगवान अपनी करुणा करते हैं। Of course, the Lord wants to establish his devotees, like Maharaj Yudhishthir. Prabhupada writes, we'll read about Kali Yuga, that nowadays the kings
who are supposed to be Raj Rishis and guided by Brahmins and protectors of cows, women, children, and old people. The leaders in today's society are like, totally blind to the knowledge of Atma Tattvam, completely blind. और इस तरह के कभी कभी अवतार आते हैं तो भगवान स्वयं आते हैं नाना अवतार में, अथवा अपने शक्तिवेश अवतार को भेजते हैं ताकि इस पृथ्वी पर जो है लोगों की सहायता हो सके और लोगों पतित जीवों का उद्धार हो सके। और भगवान श्री कृष्ण का हेतु यही था कि किसी जो है राज ऋषि को सिंहासन पे बिठाया जाए, क्योंकि एक राज ऋषि ब्राह्मणों के निर्देशन में सही तरह से राज्य चलाता है और स्त्रियों, बच्चों, वृद्ध लोगों की सहायता करके उनको धर्म ज्ञात करता है। तो इस तरह का, क्योंकि आजकल लोगों को या फिर नेताओं को इसका कोई ज्ञान नहीं है, कृष्ण भावनामृत का या भक्ति का ज्ञान, तो ऐसे लोगों को भी जो है ज्ञान पढ़ाने के लिए जो है भगवान अवतरित होते हैं। So because of the influence of Kali Yuga, 5,000 years now, human beings, including leaders, are influenced by material desires, are influenced by Rajagun, Tamagun, Rajo Ragatmika Vidi Trishnam Sangha Samudbhava. That in the mode of passion, leaders who are in the mode of passion, they're simply obsessed with material possessions, material powers, false ego, dambo, darpo, abhimanasya. So the society is covered by the lower modes of nature, passion and ignorance. तो क्योंकि कलयुग का प्रभाव है, इसीलिए सभी लोग जो है तमोगुण रजोगुण में रहते हैं। उनको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, अपने आप को ही शक्तिशाली बनाना है और काफी सारी भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करनी है जिससे कि वो भोग वृद्धि कर सके। तो इस तरह का आज के इस कलयुग युग में और नेताओं के बीच या सामान्य लोगों के बीच इस तरह का रजोगुण तमोगुण जैसे निम्न स्तर के भाव देखे जाते हैं या निम्न स्तर के गुणों में रहते हैं, इसका हम दर्शन कर सकते हैं। So of course, this ISKCON movement, this Vaishnava movement, is raising the souls from Rajagun, Tamagun to Sattvagun. Satvikam Nirmalam Phalam, Rajasam Tu Phalam Dukam, Agyana Tamasa Phalam. Karmana Sukritasyahu. In the mode of goodness, when we have persons in the mode of goodness, Brahmins, then there is purification of heart. One understands his eternal nature, that he is an immortal being, and that he is part and parcel of God, Krishna. तो इसीलिए हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना हुई है, ताकि यहाँ पर जो आत्मा है उनका उनको जो है उनका वर्णन किया जाए या उनके बारे में बताया जाए, जिससे कि सभी लोग जो है देहात्म बुद्धि से आत्मा के स्तर पर आके अपना चित्त शुद्ध कर सकते हैं, चित्त शुद्ध कर सकते हैं और तमोगुण रजोगुण के प्रभाव से बाहर आकर सत्वगुण में आ सकते हैं और इस तरह से अपना हृदय निर्मल करते हुए जो है सत्वगुण में रहकर जो है इस भक्ति का या इस वैष्णव संघ का लाभ ले सकते हैं। So this Brahminical culture that Prabhupada is creating, of course, we have to understand that Lord Chaitanya Mahaprabhu emphasized that a Vaishnava is superior to a so-called Brahmin, Mancha Tantra Udardi, Tat Karma Nipano Pro, Mancha Tantra, Mancha Tantra Sudardi. If he's not a devotee of the Lord, he may know so many mantras and tantras. A Vaishnava and a Sat Guru, he's not a real guru, cannot guide people. Vaishnavanam Swapacho Guru. So Lord Chaitanya Mahaprabhu and the great acharyas are making anyone into Vaishnavas who are qualified as Brahmins to guide human society.
तो यहाँ पे जैसे ब्राह्मणों के गुणों की बात की जा रही है, लेकिन एक वैष्णव जो होता है वो ब्राह्मणत्व से भी ऊपर होता है, क्योंकि उसने अपना संबंध भगवान से जोड़ा हुआ होता है। और प्रभु जी ने जो भी श्लोक बताया उसमें यही बताया जाता है कि भले आपको काफी सारे श्लोक पता हो या तत्व पता हो, लेकिन अगर आप वैष्णव नहीं हो तो इसका कोई अर्थ नहीं। तो इसलिए एक वैष्णव बनना एक ब्राह्मण बनने से काफी अच्छा माना गया है। So Yudhishthira Maharaj is a little concerned that perhaps Krishna has left this planet because I've seen these symptoms of Kali Yuga, 16th chapter of Bhagavad Gita. Asatyam apratishtam te jagadahuranishwaram aparasvaram sambutam kimanyatha kama hoitukam. That the demonic qualities are starting to infiltrate in his society, in his kingdom. Maharaj Yudhishthira was the king of so many 7 Varshas, not just Bharat Varsha, but the other Varshas as well. He ruled a huge kingdom because he was Rajrishi. And now he's seeing this influence of demoniac. Kali Yuga means demoniac qualities, and he's very concerned for the citizens. जो युधिष्ठिर महाराज है वो यहाँ पर चक्रवर्ती सम्राट है, केवल भारतवर्ष के नहीं किंतु अन्य वर्षों के भी, या अन्य पृथ्वी के हिस्सों के भी वो चक्रवर्ती सम्राट है। इसलिए और वो अपने जो प्रजा थी उनके बारे में हमेशा सोचते थे कि कैसे इनको सत्वगुण में या भक्ति मार्ग में रखा जाए। लेकिन किंतु इस कलयुग में जैसे यहाँ पर वो आज के श्लोकों में हम देख सकते हैं किस प्रकार से जो है आसुरिक गुणों का जो है आगमन होता है, इससे वो और उत्तेजित हो जाते हैं कि किस प्रकार से अभी प्रजाओं का जो है संरक्षण किया जाए। So, because he's a great devotee of the Lord even appeared as his cousin, although he is God himself, he appeared as his cousin in the dynasty of the Kauravas, Yadu's dynasty, the Yadu dynasty. And he is guiding society. So Maharaj Yudhishthira, of course, Kama Vavarsha Parjanya Sarva Kama Duga Mahi Shishi Chushmat Vrajan Gavan. In the, I believe, the chapter 10 of this canto, Sukadeva Goswami is describing that during the reign of Maharaj Yudhishthira, because he was constantly worshiping Lord Krishna, Kama Vavarcha Parjanya, rains were coming. The fields were full of grains and fruits and vegetables and gold and diamonds. All auspicious things were supplied by Mother Nature, Mother Earth. Sarva Kama Dugamahi, all the necessities of human life were being supplied by Mother Nature, the mountains, the seas, and so on. So he started seeing that Kali is coming. तो युधिष्ठिर महाराज एक राज ऋषि थे और भगवान के शुद्ध भक्त भी थे, और भगवान अपनी लीला करते हुए उनके ही एक जो है कजिन भाई बनकर जो है इस धरातल पर आए थे, और हमेशा उनको सहायता प्रदान करते थे युधिष्ठिर महाराज को भगवान श्री कृष्ण, और उनको अपना बड़ा भाई मानते थे। इतना ही नहीं, युधिष्ठिर महाराज भी हमेशा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में आराधना में व्यस्त रहते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बाकी चीजों का देखभाल करते थे, और इसलिए युधिष्ठिर महाराज क्योंकि भगवान की सेवा में आराधना में मग्न रहते थे, तो इसलिए वर्षा भी समय पर आती थी प्रचुर मात्रा में, और बाकी सारे धन धान्य, सब्जी, फल फूल इत्यादि, या फिर जो भी सोना रत्न, सब प्रचुर मात्रा में युधिष्ठिर महाराज के जो है राज्य में प्रजा को प्राप्त होता था। Suchi Chushmat Vrajangavam. The cows were so joyful. Payaso Dasvati Muda. The cows were so joyful that they were irrigating the fields. All the pasturing grounds were full of cow's milk. Shushi Chushmat, the milk bags of the cows were full. Cows were very happy being protected by Maharaj Yudhisthira.
and the other Varnas, the Vaishyas and so on. So the human society was very happy and peaceful. तो मनुष्य समाज काफी प्रसन्न और संतुष्ट था और शांत था युधिष्ठिर महाराज के युग में, राज्य में। और जो गाय भी थी वो इतनी प्रसन्नचित होती थी कि उनके उदर से या उनके दूध से जो है पूरी जो आसपास की भूमि थी उनको जो है गीला कर देती थी। इतनी प्रसन्न थी और हमेशा उनके उदर में जो दूध रहते थे वो हमेशा भरे रहते हैं और गिरते रहते थे। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ जो प्रजा भी थी जो है वो भी काफी प्रसन्न और धार्मिक वृत्ति की थी और सब संतुष्ट और शांत थे। The people of this world are suffering daily due to the influence of Kali Yuga. So much conflict, so much disease, so much natural disturbances, adhyatmika, adhibhotika, adhidaivika. People are suffering. And we have to raise our consciousness in Krishna consciousness. And then yare deke tare kaha Krishna upadesh. Try to give it to others. That is our only business here on this planet. तो कलयुग के जीव जो है काफी पतित होते जा रहे हैं और रोगग्रस्त है, तनावग्रस्त है। प्रतिदिन कुछ ना कुछ जो है मतभेद की बात आती है। तो इसीलिए काफी जो है तनाव में है। इसीलिए उनको अपनी चेतनाओं को जो है शुद्ध करके उठाना चाहिए कृष्ण भावनामृत चेतना में। और साथ ही साथ इस चेतना में रहते हुए दूसरे लोगों को भी ये यारे देखो त्यारे को कृष्ण उपदेश का जो है प्रचार करना चाहिए, इससे कि वो प्रसन्न हो सकते हैं। So the devotees of the Lord, because they're constantly remembering Krishna, Machita, Madgata Prana, Bodhayantas, their lives are full of Krishna, then they're abhaya, they're fearless. What can happen? The soul is eternal. And Krishna, he says, I will take care of you, don't worry. So, as apart from being abhaya, fearless, devotees are also para dukkha dukhi. Prahlad Maharaj says. So cetato vimukha cetasa indriyartam maya sukhayam baram udvahato vimuda. The Lord Nrsingadev, I don't want anything from you. I'm your devotee. My life is devoted to you 100%. But one desire I have is that these fallen souls are suffering. Maya sukhaya baram udvahato vimudan. They're bewildered by this Maya, by this Kali Yuga, and they're trying to enjoy the material world, enjoy material pleasure, material opulence, material possession. So because they're suffering, Maya Sukhaya Bharam Udvahato Vimudan, they're bewildered, then devotee is full of compassion. He is karunya, full of compassion for these fallen souls, regardless of who they are. They may be the president and prime minister and king and emperor, or they may be just a laborer person, but full of compassion and fearless. और भगवान श्री कृष्ण के भक्त जो है हमेशा उनकी सेवा में रत रहते हैं, मग्न रहते हैं और हमेशा अपनी उनकी चेतना में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। इसीलिए वो काफी करुणामय रहते हैं दूसरों के प्रति भी। और साथ ही साथ वो पर दुखी भी रहते हैं, पर दुख दुखी, अर्थात जो दूसरों को पीड़ा में देखते हुए खुद उत्तेजित होते हैं। इसीलिए भगवान के भक्त ऐसे कोई बड़े प्रेसिडेंट हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या फिर चक्रवर्ती सम्राट हो या फिर कोई एक सामान्य जो है एक निम्न जात का व्यक्ति क्यों ना हो, उन सब के ऊपर समभाव रख के उनको कृष्ण भावनामृत का ये ज्ञान प्रदान करते हैं और उनको आध्यात्मिक चेतना में अग्रसर करते हैं। We are so fortunate. So, because tava katamritam tapta jivanam, kavitam iditam, kalmasapaham, shavanam mangalam shrimadattatam. The devotees of the Lord, they're always hearing the glories of the Lord. Tava katamritam tapta jivanam. And so their lives are full
of the glories of Krishna and his holy name. And that is their life and soul. And these glorifications given by Kavitam Iditam, the great sages are giving these wonderful glories, which make everyone fortunate. और जैसे हम प्रहलाद महाराज के इससे देख सकते हैं कि किस प्रकार नरसिम्हदेव भगवान को वो कहते हैं कि क्योंकि मैं आपकी भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित हूँ, कृपया करके आप मेरी विनती सुनिए और सारे जो पतित लोग हैं उनका आप उद्धार कीजिए। तो इस तरह की याचना प्रहलाद महाराज भी नरसिंह भगवान से करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार वैष्णव पर दुखी रहते हैं। अगला एक श्लोक में प्रभु जी बता रहे हैं कि तव कथामृतम तप्त जीवनम। तो किस प्रकार के जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो पतितों को या फिर सामान्य लोगों को ये भगवान के कथामृत का उपदेश देने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, जिससे जो है संसार का जो ताप है या पीड़ा है वो बद्ध जीव हर सकता है इस भगवान श्री कृष्ण के कथा के उपदेश से। Shravanam Mangalam Srimad Atatam. That these words given by Krishna and these glories given by the great sages are full of good fortune, full of auspiciousness. And Srimad Atatam, they are very powerful. They will transform the hearts of the fallen conditioned souls. Srimad Atatam, these sound vibrations of the Lord, glories of the Lord, instructions of the Lord, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, are very powerful to transform the hearts of all fallen souls. तो इस तरह से जो ऋषि मुनि है या भगवान के जो भक्त है वो बताते हैं कि किस प्रकार ये तपते हुए जीवों के लिए ये अमृत का कार्य करता है और सारे कल्मश को हर लेता है केवल इसके श्रवण मात्र से। तो ये श्रवण मात्र से सारे जीवन में मंगल में आ जाता है और ये आध्यात्मिक शक्तियों से भरा है। और जो इसका पठन रटन या अध्ययन करते हैं वो काफी इसकी महिमा को जान सकते हैं और अपना जीवन जो है मंगलमय बना सकते हैं। Certainly those persons who spread the message of Godhead are the most munificent, the most vadanyaya, the most munificent. और जो भक्त इनका गुणगान करते और या इनका प्रचार करते ये सबसे बड़े भूरिदा अर्थात उदार माने जाते हैं ऐसे भक्त। So Maharaj Yudhishthira is feeling so much compassion that, the age of Kali is coming. People will suffer so much in so many ways. Not only people. Srila Prabhupada describes in the 15th and 16th chapter of this canto, the age of Kali Yuga, how Maharaj Pariksit punishes Kali. The animals are not to be killed. Not just the cow, but all animals are praja. All various animals are like children of human beings. Mrigostakara markaku sarasrip kaga mukshika atmanat pasyavat atmanat putravat pashyat. The Avaduta tells Prahlad Maharaj in the 7th canto that Mrigostra, Kara, Markaku, the monkeys, flies, the camels, the asses, Saraswap, even the serpents in one's household should be seen as Atmanat Putravat Pasyat, as one's own children. And they should also be given some food and allowed to live. So this is the compassion of the great devotees of the Lord, the Vaishnavas, that they consider all living beings as praja, citizens of the earth, citizens of the universe. Aham bija pradapita, and Krishna is the seed-giving father. So that is how we see the situation in the world. तो युधिष्ठिर महाराज क्योंकि भगवान के भक्त थे तो आज के इन श्लोकों में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार वो अपने प्रजा के लिए व्याकुल थे
कि कलयुग का प्रभाव आ रहा है और वो अपने प्रजाओं को जो है बचा के रखना चाहते थे। इतना ही नहीं, श्रील प्रभुपाद इसका और व्याख्यान करके बताते हैं कि केवल अपनी प्रजा में सिर्फ मनुष्य का ही रक्षण नहीं करना चाहिए, किंतु जो पशु पक्षी है उनका भी संरक्षण करने का उत्तरदायित्व एक राजा का होता है, एक राजऋषि का होता है, क्योंकि उनको भी जीवन जीने का अधिकार है। और प्रहलाद महाराज को अवधूत गण 7वें स्कंद में बताते हैं कि अगर आपके घर में कोई पशु है या सांप है या कोई भी इत्यादि छोटा मोटा पशु है, उनका भी आपको संरक्षण करना चाहिए, उनका भी आपको हित करना चाहिए, उनको के लिए भी कुछ खाने की वस्तुओं की सामग्री का अरेंजमेंट या उनको लाकर देना चाहिए, जिससे कि वो उनका भी पोषण हो सके या उनका भी जो है वर्धन हो सके। तो इस तरह से जो है वर्णन करते हैं शिला प्रभुपाद जी। So we're very fortunate and we have to embrace this great Krishna consciousness movement because the Lord has come now in this darkness of Kali Yuga. He's come to raise up all these fallen souls. Otherwise, they're doomed for millions of lifetimes in the lower species of life. Tata pralinas tamasam mudho jonishu jayate. Krishna says those who die in the mode of ignorance, they take birth amongst the lower creatures, the lower animals. So our business is to deliver these souls. It is a situation that's very critical, and we have to do our best. तो हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ मिला है। तो इससे हमारा केवल एक ही उत्तरदायित्व है या एक ही हमारा उद्देश्य है कि किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत लेके जाए और उनका उद्धार करे, क्योंकि बाहर परिस्थिति बहुत विकट है, इसलिए हमें इसे अपनाने की बहुत अत्यधिक आवश्यकता है। So the Lord has invested Nam Namakari Bahudan Dija Sarva Shaktish, the Tarpita Niyamitas Mananena Kala. The Lord has invested all of his powers, all of those powers, the power of the sun and the moon, the power of creation, destruction, all those powers are invested in the Lord's holy name. Nam Namakari Bahuda Nija Sarva Shaktish. Sarvasya Shakti Vividhaivashu. Krishna has so many powers, so many potencies. He's unlimited. Shashi Suryayo. And he is the light of the sun and the moon. People love the sun or the moon. So all these potencies are there, especially in Kali Yuga, in the holy name. तो हम इसलिए बहुत भाग्यशाली है कि हमको इस कलयुग में जो है भगवान का हरि नाम प्राप्त हुआ है, जिसमें भगवान बताते हैं कि उन्होंने सारी शक्तियाँ, असंख्य शक्तियाँ इस हरि नाम में डाल दी है। इससे ये और अधिक शक्तिशाली हो गया है और हमें इसे अपनाना चाहिए और हमारा जीवन सफल करना चाहिए। So Chaitanya Mahaprabhu, he has put great emphasis on the holy name. He only left the 8 verses in Shikshashtakam. So in this age, no one is a great Pandit that studied all the Vedas, all the Puranas. No, simply by Kirtanat Eva Krishnasya Mukta Sangha Paramvaja. This holy name is most important. Therefore, we have to chant the holy name with great focus and avoid all of the 10 offenses. This is the most important feature of devotional service. तो चैतन्य महाप्रभु ने इस हरि नाम का बहुत महिमा स्थापित की है और बहुत बल दिया है इसके ऊपर कि ये बहुत मुख्य एक कार्य है या भक्ति का अंग है जो हमको इस कलयुग में करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर कोई बड़े पंडित नहीं बन सकते हैं या फिर अन्य चीजें हम शायद हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन ये हरि नाम को अगर हम अपनाएंगे तो हम अपना जो है जीवन जो है वो सफल कर सकते हैं। So Bhaktivinoda Thakur writes the Harinam Chintamani, a discussion between Haridas Thakur and Chaitanya Mahaprabhu.
And they discuss the offenses beginning with blaspheming of devotees of the Lord who've dedicated their lives to the propagation of the holy name. And on furthermore, the other 10 offenses, considering the holy name as equal or independent of the name, equating the holy name with demigods, thinking that Shiva, Durga, Ganesh is the same as the holy name of Krishna, to offend the spiritual master, make interpretation on the holy. So the 10 offenses, Haridas Thakur goes through the 10 offenses and clearly elaborates on these offenses, and Bhaktivinoda Thakur elaborates how to avoid these 10 offenses. Very important. और चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम भी दिया है कि जिससे और उन्होंने हरि नाम की महिमा और स्थापित की है और किस तरह से इसे जपना चाहिए या इसका कीर्तन करना चाहिए वो बताया है। साथ ही साथ श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने हरि नाम चिंतामणि नामक ग्रंथ का एक रचना की है जिसमें नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के बीच में संवाद है, जहाँ पर हरिदास ठाकुर जी जो है 10 नाम अपराध की महिमा बताते हैं कि किस प्रकार गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए या देवी देवताओं को कृष्ण के तुल्य नहीं समझना चाहिए या उनसे ऊपर नहीं समझना चाहिए, या साथ ही साथ जो भगवान के जो भक्त है जो उनका प्रचार करते हैं उनकी कभी उनका कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। ये तो इस प्रकार के 10 नाम अपराध की महिमा श्रील हरिदास ठाकुर बताते हैं इस सुंदर ग्रंथ में जिसकी रचना श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने की है। So Haridas Thakur tells Lord Chaitanya Mahaprabhu that the root cause of the other 9 offenses, the 10th offense, is to be inattentive while chanting. So this inattentiveness is very, very dangerous. Therefore, Brahma Muhurta hour, we wake up before the rising of the sun, and we engage in the chanting of the holy name of the Lord, 16 rounds minimum. And of course, we perform Mangalarti and Guru Puja and so on. But the focus on our japa, on our chanting of the Mahamantra is extremely important. And we should not be complacent when chanting the holy name of the Lord. We should be very focused and hear all 32 syllables of the holy name. और एक बात जो हमको मुख्य रूप से ध्यान रखनी चाहिए या जो हमारे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते कि सारे 9 अपराध हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम हमसे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम जो है 10वां जो अपराध है या 9 अपराध का मूल कारण हमारा जो 10वां अपराध का या 10वां जो अपराध है उसका ठीक तरह से पालन नहीं करते, कि जब हमारे जप में जो है हम असतर्क रहते हैं तो यही एक मूल कारण है हमारे दूसरे 9 अपराध करने का। तो इसलिए हमें ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए और प्रयत्न ये हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि किस प्रकार हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो है इस नाम जप करें और नाम जप करने के पश्चात हम मंगल आरती या साथ ही साथ हम दूसरी चीजें गुरु पूजा इत्यादि करते हैं। लेकिन नाम जप को जो है सर्वप्रथम प्राधान्य दिया गया है और इसके जो 32 अक्षर है ये हमको ठीक तरह से सुनते हुए इसका जो है जप करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। This is the Yuga Dharma, the chanting. Yagyai Sankirtane Prayer Yajanti Shumedisha. The Yagya of the age is not Agnihotra, it's not Ashrameda Yagya, it's not Rajasuya Yagya. That is Treta Yuga. Tretayam Yajano Makai. Or in Satya Yuga, Dhruva Maharaj meditated for 10,000 years. Kritaya Dhyayato Vishnu, meditating on Vishnu. And of course, in Dwapara Yuga, Dwaparam Paricharyayam. No, in Kali Yuga, it's simply Kaliya Dari Kirtanam. Simply, you can perform the yagya in your house every day. The congregational chanting of the holy name is the yagya. You're performing hundreds and thousands of
Agnihotras and Aswamedha yagas by chanting this holy name. That is described in Madhya Lila by Haridas Thakur too. It is quoted in the purport by Srila Prabhupada. The one who thinks that one utterance of the name of Krishna is equal to 1 lakh of Aswamedha yagas, he is a candidate for the hellish planets. It's quoted from one of the Shastras, one of the Shrutis. हरिनाम संकीर्तन इस कलयुग का युग धर्म है। इस कलयुग का युग धर्म अश्वमेध यज्ञ या अग्निहोत्री यज्ञ या राजसु यज्ञ, इस प्रकार के यज्ञ इस कलयुग के युग धर्म नहीं है। केवल संकीर्तन यज्ञ ही इस कलयुग का युग धर्म है और हमें इसी का जो है पालन करना चाहिए। और साथ ही साथ दूसरे युगों में, सतयुग में ध्यान की विधि होती थी भगवान को प्राप्त करने की, त्रेता युग में यज्ञ की विधि हुआ करती थी भगवान को प्राप्त करने के लिए, द्वापर युग में भगवान के अर्चे विग्रह की सेवा की शैली होती थी भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन केवल कलयुग में हम हरिनाम संकीर्तन करते हुए इन सारे अश्वमेध यज्ञ या अग्निहोत्री यज्ञ का फल प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, श्री चैतन्य चरितामृत में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद दूसरे शास्त्रों या पुराणों का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हरिनाम संकीर्तन करता है तो एक हरिनाम जप करने से उसे लाखों अश्वमेध यज्ञ का जो है फल प्राप्त होता है। इस तरह से पुराणों से भी श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं और इस हरिनाम संकीर्तन की महिमा का स्थापित करते और बताते हैं कि किस प्रकार हमें अपने घर में भी ये हरिनाम संकीर्तन का यज्ञ करना चाहिए या संकीर्तन करना चाहिए, जिससे हमें बाकी ये सारे यज्ञों का जो भी फल है वो भी प्राप्त हो सके। So we know that Srila Prabhupada went to the Malecha countries and he transformed many thousands of young people into Brahmin or Vaishnava. Vaishnava is Brahmin. And he was criticized by the caste Brahmins and people, the Varnashramites here in India, the saffron wallas and the Advaitis and so on, the Varnashramites. They criticize, how can you give Brahmin to these Malechas and Yavanas? They have to be born in a Brahmin family. But this is not Lord Chaitanya Mahaprabhu's message at all. In fact, Gauranga Mahaprabhu in Nimai, he was also criticized by Brahmins and by Varnashramites, as I call them. So we are transcendental to even to this Varnashram system. One who is devotee of the Lord, he's already performed all the various rituals and tapasyas and punyas and all these things have already been done if one is a devotee of Guru and Gauranga. तो हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद म्लेच्छों के देश में गए, पाश्चात्य देश में, और वहां पर भी उनको इस ब्राह्मणत्व गुणों का उन्होंने उनको शैली सिखाई और किस प्रकार ब्राह्मणत्व अर्थात वैष्णव के गुण उनको दिए और उनको वैष्णव बनाया। लेकिन फिर भी जो दूसरे वर्णाश्रम या दूसरे जो ब्राह्मण होते थे वो इसका तिरस्कार करते थे कि किस प्रकार आप इस म्लेच्छों को जो है इस वैष्णव पद्धति या ब्राह्मणत्व के गुण आप दे रहे हैं या ब्राह्मणत्व का पद दे रहे हैं। तो हम देखते हैं कि भारत में भी ऐसा होता है कि आप भगवे कपड़े वाले हैं या हम दूसरे कपड़े वाले हैं, इस प्रकार वर्णाश्रम और दूसरे लोग एक दूसरे की निंदा करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी जब वो निमाई पंडित थे तब भी दूसरे ब्राह्मण उनको उनकी निंदा करते थे या उनको ठीक तरह से उनकी सराहना नहीं करते थे। तो इस प्रकार होता रहता है। लेकिन जो वैष्णव पद्धति है ये ब्राह्मणत्व या वर्णाश्रम पद्धति से भी ऊपर उठी हुई है, क्योंकि एक वैष्णव जो है वो सारे कार्य करके ही इस भक्ति मार्ग में आता है और अपना जो है जीवन सफल करता है। तो ऐसा माना जाता है क्योंकि वो वैष्णव भक्ति मार्ग में प्रगति कर रहा है या सारे नियमों का पालन कर रहा है, तो ऐसे सब वर्णों और आश्रमों से वो ऊपर उठ चुका है। So we are actually living Bhagavad Gita. Mami parte vipasrichu tepi su papayonaya studio vaishastata sudras tepi anti param gatem.
One who is strict Vaishnava, then he is a guru for the entire world, regardless of his caste, creed, gender, race. These things are all upadis or misconceptions of life, born of the modes of passion. As Krishna says in the Gita, pritakvena tuyajganam nanabhavam pritakvidam veti sarveshu bhuteshu tadganam rajasam smritam. The judging people based on caste, gender, race, religion, these are all judgments in the mode of passion or illusion, illusory ideas. तो इस प्रकार से हमें किसी को भाफना नहीं चाहिए या किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये रजोगुण का प्रतीक माना जाता है। हमको अपने आप पर जो है भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, या जो कोई व्यक्ति इस वैष्णव धर्म का पालन करता है तो वो सारे समाज के लिए गुरु हो जाता है, भले ही वो कोई उनका निचली जाति में जन्म क्यों ना हुआ हो। लेकिन क्योंकि वो उन्होंने अभी भक्ति मार्ग को स्वीकार कर लिया है और इसका ठीक ढंग से पालन कर रहे हैं, तो वो सर्वोपरि या सराहना के लिए योग्य है। So, devotee of the Lord, he says, Sarva Bhuneshu Yenaikam. He sees the soul in every creature, and he sees the super soul also accompanying all beings. And so, this is real Brahmin, this is real devotee, real transcendental personality. And therefore, he can, being qualified, deliver the fallen souls all over the world. तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो हर व्यक्तित्व में या हर जीव में जो है आत्मा और परमात्मा का दर्शन करते हैं, इसीलिए वो सारे जगत के उनको मान सकते हैं, और इस तरह से वो सभी लोगों को का जो है उनको ये उपदेश देकर उनका भी जो है उद्धार कर सकते हैं। And therefore, I encourage everyone, wherever they are, to go out and invite people, give them prasadam, share the holy name with them. And of course, Srila Prabhupada said, distribute my books, distribute my books, distribute my books. So these are the tools for preaching Krishna consciousness throughout the world. And the golden age of Lord Chaitanya is just beginning. It's just beginning to spread throughout our world. So we ask you to take it very seriously and become very Krishna conscious so that you have the power to influence others in Krishna consciousness. Prabhupada said, purity is the force. Books are the basis. Utility is the principle. Like this. तो इसीलिए हमें अपने आप पर कार्य करना चाहिए, अपने आप को शुद्ध करते हुए इस हरिनाम धर्म का या वैष्णव धर्म का बहुत गंभीरता से इसका पालन करना चाहिए। और साथ ही साथ हमें सभी भक्तों को, यहाँ पर जो आए हैं भक्त, उनको सभी को बाहर जाकर प्रसाद का वितरण करना चाहिए या हरि नाम का वितरण करना चाहिए, और साथ ही साथ शिला प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण करना चाहिए। तो ये शिला प्रभुपाद बताते हैं, मेरे ग्रंथों का वितरण कीजिए, मेरे ग्रंथों का वितरण कीजिए, मेरे ग्रंथों का वितरण कीजिए। तो इस प्रकार से हम इस वैष्णव धर्म का पालन करके जो है समाज में जो है क्रांति लेके आ सकते हैं, और अपने आप को भी जो है हम शुद्ध कर सकते हैं इस प्रकार की शैली से, और जो है इस भक्ति भावना में जो है आगे बढ़ सकते हैं। Oh, and preaching is the essence. और साथ ही साथ प्रभु जी बता रहे हैं कि प्यूरिटी इज द सोर्स, जो हमारी शुद्धता है वो एक बहुत बड़ा ताकत है। प्यूरिटी इज द फोर्स, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। और जो भी कुछ वस्तुएं हमको प्राप्त है वो उसको सिद्धांत मानते हुए उसे कृष्ण भावनामृत में लगाना चाहिए। और साथ ही साथ बुक्स आर द बेसिस, जो ग्रंथ है वो हमारे इस आंदोलन के या हमारे जीवन के बहुत बहुमूल्य आधार है, उसको समझना चाहिए। और प्रचार ही सार है, तो हमारे जीवन का जो पूरा सार है वो प्रचार ही है। ये चार सिद्धांत प्रभु जी बताते हैं। So wherever we are, we try to live as simply as possible. Atyahara prayashascha. We don't want to over endeavor for material things.
And we want to utilize our time to become Krishna conscious, to make our family members, our children, Krishna conscious, and try to give it to others. That is the formula given by Srila Prabhupada. तो शिला प्रभुपाद ने बहुत सुंदर हमको उपाय दिया है कि हमको स्वयं को तो कृष्ण भावनामृत बनना ही है, साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी हमको कृष्ण भावनामृत बनाने का पूर्ण प्रयास करना है। और इस तरह से जो है हम हमारा जीवन सफल करना है, हमें भी उदार बनना है और हमें भी अपने साधना में काफी गंभीर रूप से इसका पालन करना है और साथ ही साथ दूसरे लोगों तक तो ये उपदेश पहुंचाना ही है और इस तरह से हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। Hare Krishna, thank you very much for your association. I'll end here. And Hari Bol. There doesn't seem to be too many listeners, so. हरे कृष्णा। Hare तो Krishna, बहुत Kripanidhi Prabhu, thank you so much for giving your wonderful time. And as you mentioned in the class, that better to distribute Krishna consciousness. So thank you so much for coming and giving us this wonderful class, distributing your understanding and thought process in Krishna consciousness and guiding us in this wonderful class that you've given. So, because of time constraint, probably maybe I'll request devotees if they can probably just ask a question, just one question or comment if they would have. So I'll request them if that's okay. सभी भक्तों से हार्दिक ये निवेदन है कि अगर किसी को कोई पॉइंट अच्छा लगा हो तो कृपया करके आइए, कुछ बताइए, हाथ ऊपर करिए, या किसी के पास अगर कोई प्रश्न है, एक प्रश्न हम लोग ले सकते हैं कि समय का भाव की वजह से, तो कृपया करके आए और प्रभु का और थोड़ा समय लीजिए। हरे कृष्ण। थैंक यू केशव भारती प्रभु फॉर योर ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण। किसी के पास कोई प्रश्न है? जो प्रेयर रिक्वेस्ट आ रहा है, वेरी गुड। और कोई प्रश्न? अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं एक सवाल पूछता हूँ। प्रभु, आई विल आस्क अ क्वेश्चन। In the introduction, 11 years of your initial period of Krishna consciousness, you've done a lot of distribution of books worldwide. So in that, there must have been so many experiences you must have come across. Maybe one experience you would like to share that will inspire us to distribute, as you mentioned, distribute. Prabhupada said that we also get more inspired to distribute books and help others in Krishna consciousness. It's like anything else. In the beginning, it tastes like a little bit bitter, but because it's in a mode of goodness, in the end, it tastes like nectar. So I've been distributing books. I distribute here in Mayapur many Bhagavad-gita, Bhagavatams. I've been distributing books since 1972, nonstop. So you develop a taste, and the Lord reciprocates in your heart. So when we approach people, first of all, we have to win their hearts. Not that we shove a book in their face. So the technique is to make a friend. People are all suffering, even they think they're happy, they're suffering. And so when I go out in public, I would make friends with people. How are you? You're wearing a very nice jacket today. Give a little compliment. You look a little bit like Amitabh Bachchan. Like this. Yeah. You want to translate it? Yes, Keshav Bharati Prabhu, yes, please. हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का प्रश्न था जगदानंद प्रभु का कि जैसे कि आपने इतने सालों साल प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण किया है, तो आपको एक अनुभव बताइए कि किस प्रकार से आपको प्रेरणा मिलती है कि आप अभी भी इसका ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं, और हमें भी कुछ टिप्स दीजिए ताकि हम भी जो है इसमें रुचि लेके ग्रंथों का वितरण कर सकें। तो प्रभुपाद जी उत्तर में बता रहे हैं कि ग्रंथ वितरण करना शुरू में शायद आपको कड़वा लग सकता है, लेकिन बाद में ये अमृत की तरह कार्य करता है
और निश्चित रूप से भगवान भी हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं जब हम उनके ग्रंथों का वितरण करने के लिए थोड़ा सा प्रयास करते हैं। और मुख्यतः जब हम ग्रंथ वितरण करने जाते हैं, या मैं जब ग्रंथ वितरण करने जाता हूँ, तो केवल ऐसा नहीं कि किताब ही उनके मुंह पे मारता हूँ या दिखाता हूँ। सर्वप्रथम मैं उनके साथ मित्रता करने का प्रयास करता हूँ, उनकी कुछ सराहना करता हूँ, उनको कहता हूँ कि आपने बहुत सुंदर जो है जैकेट पहना है, या आप अमिताभ बच्चन के जैसे लग रहे हैं, दिख रहे हैं। तो इस तरह से उनके साथ पहले मैत्री करता हूँ। जब मैं मैत्री करता हूँ, तब सरल रूप से मेरा कार्य आसान हो जाता है कि अंततोगत्वा मैं उन्हें ग्रंथों का वितरण कर सकता हूँ। Of course, in the West, the influence of ignorance and passion is very strong, but people are searching. Many people are vegetarians. They are interested in the Indian yoga culture. And those are what we call our hot market. Yoga is very popular. Many times you would convince someone to buy a book, and when they realize it's about God, because we would always say this is about yoga, how to connect with your divine nature, your inner self. We wouldn't use the word God so much because in our atheistic dominated world, it's a kind of a stigma. Well, hi, how are you doing today? I'm distributing these books, ancient books of Indian culture. Sometimes they'd come back and punch you in the face, and you take it as Krishna's mercy. So Prabhupada called us warriors. He said, "You're my soldiers." Every day we would run out in the streets. We were young men, young women also, and we were like warriors. And many times people would hit devotees, especially in the airports. And then many times we'd meet nice people also who were searching. और शिला प्रभुपाद बताया करते थे कि जो भी ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं प्रभु जी, माता जी, ये सब योद्धा हैं, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। और पाश्चात्य देश में तो काफी लोग ज्यादातर तमोगुण रजोगुण में ही होते हैं, तो उनको ये ग्रंथों का वितरण करना थोड़ा चुनौती जैसा होता था। लेकिन फिर भी हम प्रयास करते थे, काफी बार हमको कुछ अच्छे लोग भी मिले, और वहाँ पर योगा का बहुत कल्चर है, या योगा की शैली लोग काफी पसंद करते हैं। तो इसीलिए हम जब ग्रंथ वितरण करते हैं तो ऐसा नहीं बोल सकते ये एक भगवान की पुस्तक है। हम उनको बताते हैं कि ये आधुनिक पौराणिक भारत की योग सिद्धियों की विधि है, जिससे आप आपका जो है योगिक योग की पद्धति से आप अपने आप को जान सकते हो। तो इस तरह से हम ग्रंथ वितरण करते थे। और ऐसा भी होता था कि काफी बार भक्तों को मारा जाता था एयरपोर्ट के ऊपर ग्रंथ वितरण के कारण से, या कभी कभी तो मुझे भी किसी ने आके मेरे चेहरे पे एक मुक्का मार दिया, लेकिन हम उसको कृष्ण कृपा या कृष्ण प्रसाद करके स्वीकार करते थे। तो इस तरह से ग्रंथ वितरण का भी एक जो है ये चुनौती भरा कार्य था, और शिला प्रभुपाद इसकी सराहना करते थे और इन सबको योद्धा बोलते थे। हरे So कृष्णा। I'll tell you one story then. Yes, Prabhu, I'd request if it's quick because I'm so sorry that the timing is, short. Oh, okay. Next time. Okay. No, you can conclude maybe in a very short way. Please Oh, tell okay. your experience, but in a very short way, please. So we in Vancouver, Canada. We got some land in the middle of the city, but it was all the old cars. So we were trying to build some kind of a temple there. So one day, this man, a German man, he owned a big equipment company in Vancouver with bulldozers and excavators. And he came to the temple. Older man. Was most people who joined were young people. He was an older man. So we said, why did you come to the temple? What's your interest? He said, I had a multi-million-dollar company,
And my wife, she was having relations with a lawyer, and they took one of these stun guns. This is like an electric taser gun. And they knew my heart was a little weak. So they came one day and they tasered me on my heart, and I fell down and they thought I had died. So fortunately, someone found me in the rain in the park somewhere in the streets, and I survived. So then I was walking around and I found a Back to Godhead magazine. And it was all wet from the rain. It rains a lot there in our city. And I read it from cover to cover. It was just lying in the street, this magazine. We distributed books. Sometimes people throw them out. Oh, God, we don't want God. So he came to the temple and he said, what service can I do? Oh, we're building a temple here. Said, no problem. I'll bring all my equipment, excavators, bulldozers. I'll supply all the equipment as a donation. Like this. Krishna supplied all the equipment we needed. And now we have a nice temple. It's 10 acres of land in the middle of the city. In Vancouver, a very popular city in Canada. Yeah, I know. And Krishna works miracles because we had no real money. We're just devotees going out doing books all day, chanting Hare Krishna. So just see how Krishna works miracles. Yeah. हम एक बार वैनकूवर में मंदिर बना रहे थे जो कनाडा में है। तो वहां पर शुरू में हमारे पास कोई साधन नहीं थे बड़े मंदिर बनाने के लिए, और छोटा सा मंदिर वहां पर था और भक्त लोग आते थे। सामान्यतः जो युवक पीढ़ियां थी वो आती थी, लेकिन एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां पे आए, और बुजुर्ग व्यक्ति आए तो वो अपनी कथा बताने लगे कि किस प्रकार वो एक बहुत बड़े व्यक्ति थे और उनकी एक कंपनी थी कंस्ट्रक्शन की, जिसमें उनके पास बुलडोजर इत्यादि सब सब बड़े बड़े चीजें थी, जिससे वो बिल्डिंगें बनाते थे, इमारतें बनाते थे। लेकिन एक बार किसी कारणवश उनके और उनके पत्नी के बीच मतभेद हुआ, और उनके पत्नी ने उनको अ, किसी तरह से उनको एक बंदूक से झटका दिया, जिसकी वजह से वो गिर गए, और फिर उन्हें लगा कि ये मर गए, तो उनकी पत्नी वहां से चली गई। और तत्पश्चात वो किसी रास्ते में पड़े थे, तो किसी व्यक्ति ने उनको सहायता की, और जब उनको उस व्यक्ति ने सहायता की और किसी तरह से उनको बैक टू गॉडेड मैगजीन वहाँ पे रास्ते में गिरी हुई मिली, और वहाँ पर बारिश हो रही थी तो वो भीग गई थी, क्योंकि काफी बार ग्रंथों का वितरण भक्तगण करते थे, लेकिन लोग भगवान की पुस्तकें इसलिए फेंक दिया करते थे। तो उनको वो किताब मिली, तो वो पढ़ते हुए वो मंदिर आए, और मंदिर में उन्होंने जब ऐसी कथा बोली और कहा कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ इस मंदिर के लिए, तो भक्तगण ने कहा कि हम यहाँ पे मंदिर बना रहे हैं। तो वो बड़े व्यक्ति ने कहा, अरे मेरी तो इसी की कंपनी है, तो मैं आपको सारी सामग्रियां देता हूँ जिससे आप मंदिर बना सकते हो। और आज हमारे पास वैनकूवर में उस सिटी के मध्य में 10 एकड़ की भूमि में ये सुंदर मंदिर बना हुआ है। तो इसीलिए कृष्ण ऐसी कृपा करते हैं कि मानो जो है इस तरह का मिरेकल हो जाता है, या इस तरह का अद्भुत कार्य करते हैं कृष्ण अपनी लीला के द्वारा। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you so much, Karunanidhi Prabhu, for giving your karuna to all of us. It's a nice, very nice pastime. Thank you so much, all devotees in our who are here in our audience. Let's pay obeisances and thank Prabhu. Vancha kalpatarubhyascha kripa Kripa Titanam Pavnibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Thank you Kripanidhi very ki much. jai, Srila Prabhupada ki jai. Thank you so much. Devotees of Dubai ki jai. Tulsi Prabhu, are you there? You want to say something before I Yeah, go? yeah. Thank you so much, Karunanidhi Prabhu. It's really very a great karuna from your side. You accepted the invitation in a short notice and you enlightened all of us. Thank you so much. Ever grateful to you. Thank you very much for asking me, and I'm very honored. Thank you. And Thank you. we will pray to Lord Nrsingadev here, Ugura Nrsingadev, Yes. for the protection of devotees in the Middle East, Yes. including, Right. of course, Please. Dubai.
We will make an offering to Lord Nishingadev tomorrow for the protection of all the Vaishnavas. Yeah, Hare yeah. Krishna. I we must get tell you, flowers? all of you, His Grace Karunadidhi Prabhu, a very senior disciple of Srila Prabhupada, and he's always in Mayapur preaching people, and every morning Mangla Arti and doing his japa seriously in the temple. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you, Hare Tulsi, Krishna. speaking Hare Prabhu. Bo. Thank you. Hare Krishna. So with your permission, Hare we'll go to the next program and invite our Jaigon Prabhu for any announcement, because today is a very nice auspicious Ekadashi day. Yes, there he is in his office chair. Haribol. Yeah, Hare Krishna, President Prabhu. Yeah, Thank devotees, आज वारुणिति एकादशी है, उपवास रखिए, don't eat grains, फल और अनाज खाइए. I mean, don't eat grains. So समय भी हो चुका है, so we'll take some announcement tomorrow. Hare Krishna, what Okay, do you do? जय, thank you Jaigon Prabhu. तो आए चलते हैं प्रेयर्स की ओर, और प्रेयर्स में आज हम लोग प्रार्थना करते हैं सभी भक्तों से कि अच्छा सेहत रहे, डेली प्रार्थना करें परम पूज्य जयपदा के स्वामी महाराज जी का, इस ग्रेस पृथुदास अधिकारी जी महाराज का, इस ग्रेस सुवर्ण गोपिका माता जी, हरिहर प्रभु गोपी गीता माता जी के जो बेटे हैं, इस ग्रेस दामोदर प्रेमी माता जी, राधा माधव माता जी, सिस्टर रेखा नगेश हेल्थ, और हम लोग चैट्स में भी बहुत सारे प्रेयर्स आए हैं, उनका भी जरा लेते हैं। अंजू माता जी ने प्रेयर किया है कि इंटेंस प्रेयर चाहिए, स्पीडी एंड हेल्दी रिकवरी ऑफ सवित्र गंगवानी एंड हेमा देवनानी। फिर अल्हादिनी माता जी ने कहा मेरे परिवार के लिए प्लीज प्रार्थना करें, हम लोग भी परिवार में शामिल हैं तो हम लोग के लिए भी प्रार्थना होगी। नितिन अग्रवाल प्रभु रिक्वेस्टिंग डिवोटीज प्रभु गुड हेल्थ, उनके पिताजी गिरीश मोहन प्रभु के लिए। रविशंकर दूधा प्रभु ने कहा है कृष्णा प्रभु जी काइंडली इंक्लूड प्रेयर्स फॉर मोनाली माता जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सरस्वती माता जी के लिए प्रार्थना करें, सो दे कैन डू स्ट्रांगली सेवा। यस सेवा, यस दे कैन, हम उसके लिए प्रार्थना करें। प्रतिमा माता जी ने कहा प्रेयर्स फॉर प्रांजलि प्रेष्ठा प्रसन्ना जी एंड माय मदर। प्रज्ञा जोशी, राम भूमि देवीदासी ने कहा है मेरे बेटे सात्विक के लिए प्रार्थना करें। और विनीता माता जी ने कहा है मेरे पप्पा के लिए, रमशवद सिंह के हेल्थ और स्पीडी रिकवरी के लिए। दमयंती देवीदासी उनकी बेटी कुंती देवी के लिए, कुंती दासी के लिए। विमला भागवती देवीदासी ने प्रार्थना रिक्वेस्ट की है, डिपार्टेड सोल ऑफ माय ममा जी। रविंद्र कटियाल फैमिली आरती गौरी एंड सुरभि's वेलबींग। तो सभी भक्तों के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करो, हमारे खास करके हमारे जो अभी उपस्थित है उनके लिए भी प्रार्थना करें। और प्रेयर फॉर माय सन, लास्ट रिक्वेस्ट आया, और एक रिक्वेस्ट केशव भारती प्रभु जो हमारा हिंदी अनुवाद किए थे उनके हेल्थ के लिए। और ईयर इन्फेक्शन, अरे बट आप तो अच्छा अनुवाद किए, तो ईयर तो आपका इंटैक्ट है, बट फिर भी आपका इन्फेक्शन के लिए हम लोग प्रार्थना करें कि आपका ईयर इन्फेक्शन जल्दी चले जाए। तो सभी भक्त प्रार्थना करें। समय का अभाव है, जैसे 3 बार करते हैं, 1 ही बार करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी से प्रोग्राम को विराम देते हैं। आप लोग खूब आनंद में रहिए, आज एकादशी है, खूब जप करिए, प्रसाद कम खाइए, जल्दी सो जाइए, और कल जल्दी आइए वापस प्राण समय के हिसाब, और फिर बाद प्रसाद प्रोग्राम अटेंड करें। श्री प्रभुपाद की जय। इसी से प्रोग्राम को विराम करते हैं। हु इज द होस्ट? होस्ट नहीं, हु इज कंट्रोलिंग दी? कृपया करके मीटिंग को विराम दें, कल मिलते हैं।